Good morning students. Today we are going to start with lesson number 20, our community life. Our community life. Now what is our community life? We are going to learn in this chapter. Now what difference do you see in the two pictures shown below? Here you can see there are two pictures, and what is the difference between the two pictures? See, here you can see a girl, she is sitting alone, and in this picture you can see there are three people in one picture. Now whose company do you enjoy? That you have to tell whose company do you enjoy? Means your friends, your family, your relatives or school friends, whatever. How do you decide which game to play? Now you play with your friends, then how do you decide that which game should we play? We like the company of other people. We like the company of other people means हमें दूसरे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है. At home we live with our parents. At home with whom do we live? We live with our parents. We also have neighbors. We miss our friends if we can't meet them. Okay, we miss our friends when we cannot meet them. We miss even our pets when they are not around. Pets means dog, cats, whatever pets you have at your home, you miss them whenever they are not around. People like to live in groups. Now, people like to live in groups. No one likes to live alone. Everyone likes to live in a group. Living in company of our family, neighbors and other people means living in a community. Now, as we have seen our community life, what is community? Living in the company of family. First with our family, then with our neighbors and with other peoples means living in a community. Now here you can see the first picture, a girl talking to a group of children. Here you can see that a girl, she is talking with a group of children. In the second picture, children holding hands in a circle, right? See, in the second picture, children are holding hands in a circle. And in third picture, helping a boy who has fallen off with his bicycle. Okay, now a boy has fallen from his bicycle. People are helping him to get up. Now community life is interdependent, means it is dependent on each other. Interdependent means dependent on each other. We all need community life. If we don't have friends and other people around us, who will we speak to? Now, if we are living in a community, we speak to each other, we talk to each other, we share our problems with each other. But if you don't have friends, you don't have other people around with whom you will talk, with whom we will speak, with no one. We will be alone, totally alone. Who will we share our joys and sorrows with? Share our joys means हम बोलते हैं ना, सुख दुख हम किससे बांटेंगे, like that. हम किसको बताएंगे हमारे जॉयज़, हमारे सॉरोज़, अगर हमारे पास हमारे फ्रेंड्स ना हो, हमारे नेबर्स ना हो. इन अ कम्युनिटी वी गेट कंपेनियंस. वी फील सिक्योर इन देयर कंपनी. हमारे फ्रेंड्स के साथ हमें हमेशा सिक्योर लगता है. सो वी हैव देयर कंपनी. वी हेल्प देम एंड दे टू हेल्प अस. हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं. दिस इज़ नोन एज कोऑपरेशन. हम जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं मीन्स वी हेल्प देम एंड दे ऑल्सो हेल्प अस. दिस इज़ नोन एज कोऑपरेशन. म्यूचुअल कोऑपरेशन इज़ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी लाइफ. सबसे ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी लाइफ क्या है हमारी? कि हमारे में अंडरस्टैंडिंग होती है, कोऑपरेशन होता है, हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं. रूल्स आर नीडेड टू बिल्ड दिस कोऑपरेशन. कुछ रूल्स होने चाहिए ऐसे कोऑपरेशंस फॉर्म होने के लिए. नाउ यूज़ योर ब्रेन पावर. व्हाट इफ़ देयर वर नो फार्मर्स? आपको ये सोचना है, अगर फार्मर्स नहीं होते तो क्या होता. व्हाट इफ़ देयर वर नो स्कूल्स? अगर स्कूल्स नहीं होते तो क्या होता. What if there were no hospitals? अगर हॉस्पिटल्स नहीं होते तो क्या होता. What if garbage were to pile up? तो क्या होता. ये सब चीज़ें अगर नहीं होती तो क्या होता, ये आपको सोचना है. Our daily needs are fulfilled in a community. Education and health facilities for everyone can be developed in a community. Education और health facilities जो है वो कहाँ पे डेवलप होती है? हमारे कम्युनिटी में.
गुड्स हैव टू बी प्रोड्यूस टू सेटिस्फाई नीड्स। अभी हमारे जो नीड्स होते हैं डेली यूज़ के, उसके जो गुड्स होते हैं वो किससे प्रोड्यूस होते हैं? लिविंग इन अ कम्युनिटी ओनली, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स प्रिपेयर करना, बनाना, उसे बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। द प्रोसेस ऑफ रीचिंग दोज गुड्स टू पीपल इज कॉल्ड सर्विस। द प्रोसेस ऑफ रीचिंग दोज गुड्स, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए वो आपको ला के देंगे, वो आपको बना के देंगे, तो उसे क्या बोलते हैं हम? प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सर्विस। प्रोडक्शन एंड सर्विस आर बोथ नेसेसरी टू सेटिस्फाई नीड्स। इसलिए वो चीज़ें बनाना भी है हमें, और वो जहाँ चाहिए वहाँ पे आपको पहुँचाना भी है, तो उसे हम बोलते हैं सर्विस। प्रोडक्शन एंड सर्विस आर बोथ नेसेसरी टू सेटिस्फाई नीड्स। मैनी पीपल कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस। वन पर्सन कैनॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग, नाइदर कैन ही गिव ऑल सर्विसेज बाय हिमसेल्फ। Community life is interdependent. Now this part I will explain you tomorrow. Thank you.